I'm Nivedita, and this video is for the student of class 11th. But before I go to the topic, as this is the first video for the syllabus of the 11th biology, so few things I'll be telling you. Welcome to all first, and why the this begins with the chapter 2. Everyone will have this question. So for your information, for this year, the chapter 1, that is the living world, that has been deleted. Okay. So we will begin with the chapter 2. Okay. Time to time I'll be telling you, and some topics also means this is the unit 1, diversity of living organism. So first chapter is totally deleted, and in chapter 3, plant kingdom, there also some topics are deleted. Okay, so that's why beginning with this, and this is the second chapter, biological classification. Will give just a suggestion for this first unit, which is introductory, as well as it is quite means you will get it is so similar with the syllabus of science syllabus, means especially the bio section of class 9th. So these topics are there also. Okay, they are expanded here in class 11th. Is it? So this is the introductory unit in which we will study the classification, plant kingdom and animal kingdom. So the reading is compulsory. Compulsory means it is very important. Okay, reading the NCERT books line by line. Okay, so that will cover the syllabus, and you have this PPT, so you can have notes from this PPT. Okay, so beginning with the chapter 2, biological classification. Okay, so we will begin means classification term is not new, and not it is the work of present time only. So many attempts have been done. You know very well why the classification is done. Okay, this is you have gone through in class 9th. So classification, for the classification earlier attempts also have been done, and classification of organism is almost as old as man himself, and our Vedic literature also reveals the process of classification or doing the classification, and that also this is mentioned that 740 plants and 250 animals that has been till that these organisms have been classified. And Hippocrates and Aristotle, the Greek scholars, they also arranged animals into four major groups: insects, birds, fishes and whales. So you will get it ki so many biologists and ecologists, they have done this job, and little by little it was there is a gradual improvement also. Okay, and Theophrastus, who is the father of botany also, categorized the plants into four categories: trees, shrubs, undershrubs and the herbs. Okay, but see, their bases were very superficial one. Okay, and that's why they were not you can say they were not in so much of use, because there is not clarity. The basis what they have selected, they were not very authentic one, you can say. Okay, and John Ray also in the 17th century described 18,000 plants and animals in 3 volumes, and he has written books, and there he has given all these details. And this is one, means two kingdom classification.
Okay, two kingdom system, and this was proposed by the Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus के नाम के साथ ही आपको याद आएगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये 9th में सुना है. बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स गिव टू नेम्स टू ईच ऑर्गेनिज्म. ओके, मीन्स एवरी स्पीशीज, उनको नाम देना. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को कहा जाता होमो सैपियंस. तो ये जो मेथड थी टू नेम्स को देने की, दैट इज जेनेरा एंड जीनस एंड द स्पीशीज. पहला नाम जो होता है वो जीनस होता है, सेकंड स्पीशीज होता है. ये कैरोलस लिनियस ने ही दिया था, एंड कैरोलस लिनियस ने ही टू किंगडम सिस्टम भी दिया था. तो उसने सारे ऑर्गेनिजम्स को दो में क्लासिफाई किया था, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. एंड ये उस समय के हिसाब से सही भी था. And this system was used till very recently. काफ़ी सालों तक इसको यूज़ किया गया और किया जाता भी है. सो ये उस समय के हिसाब से सही था. अब उसके बाद तो नया किंगडम सिस्टम आ गया. तो टू किंगडम सिस्टम जो था उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. वी हैव सम ड्रॉबैक्स हियर. Excuse me. Because the two kingdom system didn't distinguish between prokaryotes and eukaryotes. इसका मतलब टू किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सबको एक साथ रख दिया गया था. फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब का कोई क्राइटेरिया नहीं था. ये सारे के सारे हमको मीन्स किसी एक ग्रुप में भी इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स मिल सकते थे. ओके, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके पास प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एनिमल के भी फीचर्स हैं. लाइक एनिमल्स के जैसा, जैसे कि इसके पास फ्लैजिलम होता है और ये मूव कर सकता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ लैकिंग इन द सेल वॉल. एंड तो ये एक एनिमल कैरेक्टर हुआ. ओके, फ्लैजिलम का होना एंड सेल वॉल का ना होना. But at the same time, many species of it have the chlorophyll and they can photosynthesize. So this is a plant feature. So ये इसकी भी जो keeping थी वो clear नहीं थी. In the same way, we have more evidences, more points. Chlamydomonas, which is also a unicellular alga. मतलब alga means this is a plant feature. Alga मीन्स फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, बट इसके पास भी फ्लैजिलम था. फ्लैजिलम का होना ही एक एनिमल कैरेक्टर है. स्लाइम मोल्ड्स विच इज अ ग्रुप ऑफ फंजाई एंड दिस वाज लेकिंग, इट लैक्स द सेल वॉल. ओके, इसकी पोजीशन भी क्लियर नहीं थी. एंड लाइकेंस, ग्रेट. ओके, इसके पास के जो इसके लाइकेंस के पास तो बहुत पेक्यूलर फीचर है, which is neither a plant or nor the animal character. Okay, so in सब की जो more examples are there, which are the drawbacks of this two kingdom system. Okay, तो ये उसके drawbacks थे, हम पढ़ेंगे कि इसके means how the new system has been proposed and which was having so much of clarity. And और भी points हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया it is a great taxonomic problem क्योंकि इसके पास सेल वॉल भी है और फ्लैजिला भी है, और इसे प्लांट किंगडम में रख दिया गया था. Sponges like plants, they are fixed. Okay, but दे आर इरेगुलर मीन्स उनका फिक्स होना और इरेगुलर इन शेप होना ये प्लांट कैरेक्टर है. बट वो होलोब्लास्टिक थे, ये एनिमल कैरेक्टर है. इन द सेम वे फंजाई, इनके पास सेल वॉल होती है बट दे डू नॉट हैव द क्लोरोफिल. ओके, so further some plants and animals didn't exist as recognizable organism. Okay, and you will see this means keeping and grouping of these organisms is unjustified. Okay, because it doesn't indicate the gradual evolution. ये एक और lacking है
कि ये सिस्टम कहीं भी ग्रेजुअल इवोल्यूशन को नहीं दिखाता. ओके, सो द सिस्टम इज inadequate. Now, five kingdom classification. उसके बाद आया five kingdom classification and this was proposed by the R.H. Whitaker, an American ecologist. तो he has proposed this in 1969 and he divided the living world into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. तो ये 5 किंगडम थे. इसमें बहुत सारा जस्टिफिकेशन मिलेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया है यहाँ पे इस किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. And in this classification, organisms of each type have a proper place from the point of view of their structure and the evolution. Hence, his scheme means his classification has found favor with most biologists. Okay, इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया गया. बहुत ऑथेंटिक था ये और जस्टिफाई करता था ऑर्गेनिजम्स को जिस कैटेगरी में रखा गया था. इस क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस सिलेक्ट किए गए थे वो था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ओके, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोटिक और द यूकैरियोटिक वन. देन उनकी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है. सेकंड पॉइंट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन means whether they are unicellular or the multicellular. Then their mode of nutrition, and most important thing is phylogenetic relationship that has been considered. Or five kingdom classification is very good and that's why it is widely accepted. So the reasons are there ki why it was accepted. The first reason is there is separation of prokaryotes. जो पहले प्लांट्स ग्रुप में रखे गए थे उनको अलग कर दिया गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन सारे प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रखा गया. इन द सेम वे जितने यूनिसेलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रखा गया. वी विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल इन द कमिंग वीडियोस. एंड फर्दर फंजाई, ओके, जो फंजाई है उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा गया. एंड नाउ in this system, in 5 kingdom classification, plants and animal kingdom, they are now homogeneous one, and this classification is more phylogenetically reasonable. Okay, so ये points हैं जो justify करते हैं कि ये system बहुत अच्छा है. एंड जो ये एक समरी है जिसमें ये दिया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब किया गया तो 5 जो डिफरेंट किंगडम थे उसमें किस किस तरीके के उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं. ओके, लाइक मोनेरा यू कैन गेट कि मोनेरा में जो एंशियंट बैक्टीरिया थे, ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं, इनको रखा गया. एंड इन द सेम वे यू कैन गेट बहुत सारे उसमें हर ग्रुप में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है ये दिखाया है इस टेबल में.